असद भाई एक स्नैपचैट पे भी ग्रुप बना दो, पता है। अरे बहुत टाइम है यार, बना लेंगे वहाँ भी। जिसमें शमित अपनी पोइट्री सेंड करेगा। कानपुर से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। भाई ये विपिन वाली हरकतें छोड़ दो भाई। कौन डीएनए 16 का है? चात्री माँ कसम बहुत सेक्सी लग रहा भाई। अरे कंट्रोल उदय भाई कंट्रोल। बता इसको उदय शेट्टी कौन है, वो क्या कर सकता है। मेरी एक टांग। अरे अरे विनीत भाई इतनी खुशी, मतलब इतनी खुशी। विनीत तेरी रात की उतर गई। ये रात की उतर गई। हाँ भाई उतर गई। तेरी तो बैक आ रही थी बार बार, तू सही है ना, हैंगओवर तो नहीं है? सही। विनीत ऐसा। हाँ भाई विपिन। हाँ भाई, क्या हाल? बस सर, सर आपकी दुआ है सर, बस जिंदा है सर। रोज जाके छू लिया करो भाई, कम से कम आशीर्वाद बना रहा है। ये कैसा घुमा के लाफा मारेंगे ना। भाई जो कभी कर नहीं पाए वो अभी कहाँ कर लोगे यार। जाके देखो रिकॉर्ड में, इंसानों की भगवान है, समझे। गणेश ब्रह्मा भाई है कभी तो ब्रह्मा चेहरा है भी तो। दिखा दिया करो। अम्मा हाशमी भाई कैसे हैं? ओ, भाई गणेश का ओ चेहरा नहीं दिखा काफी यार। दिनों से। भाई सुनाई नहीं दिया। गणेश भाई का चेहरा नहीं देखा काफी दिनों से। देख भी नहीं सकते भाई, ब्लैक होल वहीं से स्टार्ट हो रहा एक और होल कहीं और पे चालू हो रहा है, बताएं। है। रिकॉर्ड हो रहा है, वरना तुम्हें गाली क्यों देते ना अभी।
और अंकित भाई? अरे भाई वो कानपुर से है, वो रिप्लाई नहीं करेगा। वो रखता है हम लोगों को। क्या बोल रहा भाई असद भाई? तुम भी रिप्लाई नहीं करोगे क्या? और गौतम भाई क्या हाल चाल? बुला रहे क्या ब्रो? गौतम भाई को पूछ रहे थे, अरे जवाब ही। ढूंढ दे उनको, गौतम एंजॉय सर, करने दो थर्ड। गौतम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। बस बढ़िया है अपना। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ कपिला सर हैं एक, हमारे कॉलेज में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कपिला कौन सर सर? हैं। कपिला सर हैं। गुड मॉर्निंग भाई। यस इनके सर। वाइफ का डेथ हो गया है आज सुबह में 2-3 बजे के आसपास। सर किसकी किसकी डेथ होगी सर? कपिला सर हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर में ही हैं, हमारे कलीग हैं। सर ड्यू टू सर कोविड? ड्यू टू कोविड। कब सर, आज हुई उनकी? हाँ, Oh, आज shit, सर। सुबह में मतलब लेट नाइट रादर, और हमारे यहाँ अर्ली मॉर्निंग समथिंग लाइक 12 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास। अभी तो मैसेज आया हुआ। तो आत्मा को शांति दें उनके, भगवान। ओम शांति। ठीक है, हम लोग वी स्टार्ट द क्लास इन 10 मिनट्स। वी स्टार्ट द क्लास इन 10। तो सैड न्यूज। यस क्या सर। हुआ? बहुत सैड न्यूज़ है सर। यस, वेरी क्लोज। ऐसे तो सुन ही रहे थे, बट इट इज टू क्लोज, टू क्लोज, टू क्लोज। ठीक है, वी जस्ट स्टार्ट इन 10 मिनट्स। 9:15 पे क्लास शुरू करते कितना एज होंगे सर? ओके सर। हैं। एज मस्ट बी अबाउट 65 और सो। ठीक है, थैंक यू सर। शायद 50 होना चाहिए, और मे बी इवन लेस, मे बी इवन लेस। ठीक है, जस्ट जस्ट स्टार्टिंग 2 मिनट्स। टू नहीं, 9:15 पे। ओके सर। पंडित जी कैमरा बंद कर लो। गौतम सर, वेदर एंजॉय कर रहे हैं गौतम सर। गौतम सर ओपी हैं।
गौतम अपना कैमरा बंद कर ले भाई। All right, so कहाँ थे हम लोग कल? What we were doing yesterday? सर कल टिल्ट एंड ड्रिफ्ट कर लिया था हम लोगों ने. We also saw the behavior of the gyro compass gyroscope at various locations on Earth. We did it on equator. We saw it on equator. We saw the behavior on the pole. We saw the behavior on the intermediate latitude. Equator पे tilting maximum, drifting 0. Pole पे drifting maximum, tilting 0. यस सर. Intermediate latitudes पे
both of these tilting and drifting depending on the latitude. अगर latitude के नजदीक रहेंगे, 0 के नजदीक रहेंगे तो tilting ज्यादा, अगर pole के नजदीक रहेंगे तो drifting ज्यादा. But this should be remembered that tilting maximum at the equator is there. It is there only when the azimuth angle is 90 degrees. If it is aligned with the meridian, then there is no tilting or drifting. Is that correct? कल सारा हमने experiment करके देखा था globe पे. Yes, sir. Okay. So we go to the slides. We go to the slides and from there we take it on further. नए concepts आज आएंगे discussion में. Let me find out the file. Let me open. So this was the last slide we had seen, correct? Yes, sir. Okay. So both of this is happening. Gyroscope, if it is kept at the intermediate latitude, we can see little bit of tilting, little bit of drifting. So by definition, tilting is the rate of change of the tilt angle. That means how gradually the angle with respect to ground is changing. Drifting is the rate of change of the drift angle. How is the angle of the spin axis with respect to meridian is slowly changing. Both have to be at the rate of 15 degrees, but we have seen already some place 0, some place maximum, some place in between. So this tilting and drifting, when put into the form of a formula, looks like this. See this and tell me if you understand. Yes, इसका sir. मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं? We had seen that Earth is rotating at 15 degrees per hour. So that should be the rate of tilt and drift also. But depending on latitude and the azimuth angle, the tilting was different at different places. So tilting is equal to 15 degrees cos latitude sine azimuth. Tilting is maximum at 0 degree latitude and when azimuth is 90 degree. Azimuth angle is 90 degree. Can we relate to it? Yes, sir. If we keep it aligned, if we keep the
spin axis aligned at the equator only, but aligned with the meridian. That means azimuth is equal to 0 degree. Then what happens? The whole things become 0. Sine 0 is equal to 0. So tilting becomes 0. We also saw about drifting, that the drifting was maximum at equator, sorry, at the poles, but 0 at the equator. That means it is a function of the sine of the latitude. 0 degree plus 0, sine 0 is equal to 0. Sine 90 is equal to maximum 1. So 15 degrees into 1 gives you maximum drifting. We have also understood that a free gyroscope is taking a complete 360-degree turn in 24 hours. And during this time, there was tilting and drifting which was taking place. When it was kept on the earth somewhere, some latitude, then there was this constant changing, tilting and drifting, of course, depending on the azimuth angle and depending on the latitude. But the spin axis was tracing that circular path which we have seen earlier. Is that correct? So the same thing can be represented like this. The circular path traced by the gyro's spin axis now is shown with these elements, something called TG and DR. As it is completing the circular path, the spin axis is showing tilting and drifting. So in this diagram, the movement is explained by this. The drifting is here. That means taking it away from the meridian. ये बीच का meridian है. If the spin axis was aligned like this, that means it is, of course, looking at the north. But after some time, it will change to this because there is a drifting, correct? नहीं समझ में आया? सर पोल पे ड्रिफ्टिंग है सर। क्या 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 बोर्ड पे? नो सर ठीक है। स्पिन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए आप बोल रहे हो? ओके, चलो डायग्राम उसमें देखते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं। What we are saying, let us keep this spin axis on the intermediate latitude. So if you keep it here, aligned with the meridian, as the earth is rotating,
Is it shifting away from the meridian? इस meridian से दूर हो गया कि नहीं? If we are keeping it aligned like Yes. this, look what is happening. That right now the gyro star is there. It is aligned with the meridian and at some latitude. As it is happening, is it creating an angle with the meridian? Yes, sir. ओके, इस मेरिडियन को दे, ये मेरिडियन दिख रहा है, Yes, sir. यस सर ये लाइन दिख रही है, ये वाली, हाँ सर. यस सर तो इससे अलाइन करके रखा है. एज इट इज टर्निंग, ये तो उधर को ही देखता रहेगा. तो एज दिस इज टर्निंग, इज इट क्रिएटिंग एन एंगल विद दैट लाइन मेरिडियन? Yes, sir. That means drifting is happening. So drifting is happening eastward. But after this, it starts to come to this side. Drifting starts to come to this side. अगर दूर गया है और फिर वापस वहीं आया है, आप अपनी जगह से हिलते हो, आप कहीं खड़े थे, अपनी जगह से हिले और फिर वापस आए हो अपनी जगह, तो एक बार हिलने का, दूर जाने का मोशन होगा, एक बार नजदीक आने का मोशन होगा, तभी तो वापस अपनी जगह पे आए ना. क्या नहीं बोलते? समझ में आया, एक बार फिर से समझा दी प्लीज. मैंने कहा आप घर से कहीं जाते हो और फिर घर में देखते हो मुझको, मतलब आप घर से निकले तो जाते हुए का मोशन रहा होगा आपका, फिर कहीं से वापस आते हुए का मोशन होगा, करेक्ट? तभी तो घर में वापस दिख रहा है ना. हाँ सर. हाँ सर. सुबह को कॉलेज गए तो घर से जा रहे थे, शाम को कॉलेज से वापस आए तो उल्टा डायरेक्शन हो गया. तो दैट मीन्स व्हेन इट इज हैपनिंग लाइक दिस, देन इट इज ऑफ कोर्स, एक बार तो इधर को जा रहा होगा, फिर वापस आ रहा होगा, तभी तो वापस 24 घंटे में यहाँ पे आ गया. साइक्लिक मोशन है ना. हाँ सर. So that is what we are saying, that okay, बहुत ज्यादा ये नहीं करते. So tilting and drifting basically is happening in cycle. एक बार ये दूर जाता है, फिर वापस आता है. Then it is going like this. For example, it is drifting away to the east. After this time, it is coming back towards the meridian. तभी तो यहाँ पे आके वापस मेरिडियन पे आ जाता है ना. एक बार दूर गया, यहाँ 180 के बाद नजदीक आना शुरू होता है. एक बार दूर गया, फिर वापस आने लगता है. तो इधर को जा रहा है तो ईस्टर्ली मूवमेंट, जब इधर को जा रहा है तो वेस्टर्ली मूवमेंट हो गया ना. तो सर जब ये यहाँ से 180 यहाँ डिग्री पहुंच, पूरा कर लेगा, जब 180 डिग्री पूरा कर लेगा तो तब ये वापस जीरो पे आ जाएगी कि तब मैक्सिमम पे जाएगा? मैक्सिमम पे होएगा और वहां 180 के बाद वापसी की तरफ चलेगा. ओके, मतलब 360 पे अपने जगह पे वापस आ जाएगा. ओके ओके. मतलब मैंने अगर कुछ देखा, मैं बगल में देखता हूँ, मेरी गर्दन इधर को जा रही है, फिर वापस भी तो आ रही है, तभी तो मैं वापस देख रहा हूँ आपकी तरफ. यस सर. एक बार ड्रिफ्टिंग अवे, लेट अस से ईस्टर्ली, देन ड्रिफ्टिंग वेस्टर्ली, तभी तो मैं आपकी तरफ देखूंगा, करेक्ट? ओके, तो डोंट ब्रेक योर हेड. इतना काफी है कि एक सर्किल है, उसमें टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग होती है. एक बार दूर जाता है, फिर वापस आता है मेरिडियन की तरफ. सो दैट इज हैपनिंग. नाउ also see this observation. Give me your observation. What is happening when in the northern hemisphere? Which side is the drifting?
Easterly. 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 In plus minus? Plus. Plus. If we keep it here, Earth is still rotating like that. Where is the tilting? Suppose it is here. It is going to look here. Which side is the tilting now or the drifting now? Meridian here. It has come to this side or not? वेस्ट साइड से वेस्टर्ली से देखो, फिर से देखो, यहाँ वेस्टर्ली पे से हमने इधर को रखा है, तो यहाँ से इधर पे देखता रहेगा, ये मेरिडियन से किधर को चला गया? वेस्टर्ली Then it comes back here, वेस्टर्ली सर westerly into the ground. So यहाँ पे हमने देखा कि the drifting is happening easterly, मेरिडियन से इधर को चला जाता है. Also we saw that it is lifting above the ground or not. That means tilting was positive, ऊपर की तरफ जा रहा था. But here, what is happening? ये किधर को घुस गया? When it is changing from here to here, is it into the ground? यस सर That means in the southern hemisphere, tilting in and drifting both are negative. Drifting is westerly, tilting is downwards. On the northern hemisphere, the tilting is positive easterly. Sorry, drifting is easterly, positive, and tilting is also positive above the ground. सर एक बार ये ड्रिफ्टिंग फिर से दिखा दिया क्या दिखा दो? नॉर्दर्न और सदर्न में हाँ, ड्रिफ्टिंग सर northern फिर से दिखा दिया ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. Okay, can you see this meridian? यस और डार्क करके बना दिया आपके लिए. Is it right now aligned? यस Is it horizontal? सर वर्टिकल Vertical. आप इस पे देखो, वर्टिकल यहाँ पे होगा तो जमीन पे ऐसे होगा वर्टिकल. यस सर इसके सरफेस में Horizontal. पैरेलल देख रहे हो ना? यस सर हॉरिजॉन्टल मुझको मत देखो वर्टिकल, मैं रेफरेंस नहीं हूँ, तुम यहाँ खड़े हो. यहाँ पे तुम खड़े होगे तो यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस ऑन द सरफेस. पैर नीचे, सिर ऊपर आसमान की तरफ होता है ना? यस सर तो आप ऐसे देखोगे तो क्या हॉरिजॉन्टल देखोगे कि नहीं इसको? हाँ सर हॉरिजॉन्टल So this is basically with respect to the surface of the earth, it is horizontal and it is aligned to the meridian also. So as the earth is rotating, has it created an angle with respect to that meridian? यस सर Which side it has drifted? ईस्टर्ली Easterly. Has it also lifted above the ground? यस सर That means tilting is positive. यस सर देखो गुरपिंदर क्या मस्ती कर रहा है. Other thing, next one, in the southern hemisphere, is it? Can you see this meridian यस सर aligned with the meridian in southern hemisphere? Aligned with the meridian and horizontal. Now, when it is going like this, can you see the drift?
Because remember that the gyro star is there, it will continue to look there itself. So Yes, sir. it is still looking there. Yes, sir. So as it is changing, what kind of drifting have you seen? Westerly, negative. Western. Also, if you take it further, it is getting into the ground or not? Yes, sir. It is negative. तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था, बाहर की तरफ, ये वाला हेड अगर देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं? Yes, sir. यहाँ से अगर यू करेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है. That means tilting is downwards into the ground. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay. Now let us go to the slide once again. Okay, so here what we have. Yes, now what we discussed, read it and see if you are okay with it. If you agree. So the movement when represented on paper can be shown like this, as we said, that there is tilting and drifting. If it is horizon, अभी नॉर्थ में हमने देखा कि ड्रिफ्टिंग पहले ईस्टर्ली होती है, 180 डिग्री के बाद वो ड्रिफ्टिंग दूसरी तरफ होने लगती है. नहीं, 180 के बाद नहीं, यहां से यहां तक. If you see here the drifting stops, then it starts to come to this side. Here it stops here, then it starts to come to this side. So okay, ज्यादा माथापच्ची मत करो, इस डायग्राम को याद रखना कि in a circle there will be representation of the two movements, tilting and drifting, by these arrows. A free gyroscope is showing two motion, tilting and drifting, which is represented like this. I want you to take out the notes that I sent to you, question answer bank, question bank. I'll wait for you. We will review one or two questions from there to see, to check out our understanding. जो अभी तक हमने सीखा है, जो बात करी है, can we put them in answer? If the question is asked, can we write the answer or not? Please open the notes. Last में होगा gyro compass. Chevron, you only tell me. Yes, sir. Have you opened the notes? Yes, sir. Okay. What is the first question that you're seeing there? Question 1, sir. What is a free gyroscope? Describe its basic properties. Okay. So this is a simple plain question, very popular.
You have to answer this. Now, once you have practiced a little bit more, when you have studied a little more, I'm talking to the whole class. Do you think it is understandable and you can write about it? दिमाग में पिक्चर घूम रही है, जैसे ही पूछा व्हाट इज फ्री जायरोस्कोप, तो वो ग्रे कलर, रेड कलर ये सब घूमा, बेयरिंग्स, Yes, sir. गिम्बल्स घूम रहे हैं. So what you are Yes, seeing sir. in your mind, can you write about them? Yes, sir. We can write the parts of it and about the axis. Yes, very good. So read through the answer. Same thing, how to write it is also given to you so that it is assisting you in putting the words in on the paper. Read the answer, Yes, sir. please. A free gyroscope consists of a spinning wheel or rotor rotating about an axis perpendicular to the plane of the rotor, which is suspended within rings called gimbals in such a way that it permits the rotor to move freely about three mutually perpendicular axes, known as the spin axis, horizontal axis, and vertical axis. The mounting base is called the phantom. The gyroscope in this arrangement is not constrained in any way by any force acting upon the rotor so as to alter the direction of the spin axis where it points. Then this is called a free gyroscope. A Clear? free क्लियर है? हमने उसी Yes, चीज sir. को डिस्क्राइब किया जो जो हमने देखा था. एक फैंटम है, नीचे लकड़ की बेस थी छोटी सी, उसके ऊपर में रिंग्स लगे थे विच आर द गिम्बल्स, एंड दे वर अरेंज इन सच ए मैनर कि मैं जब नीचे बेस घुमाता था तो भी स्पिन जारो रोटर जो है वो वैसे का वैसे ही रहता था, उसके ऊपर असर नहीं पड़ता था. सो इट वाज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. The gyro was free to rotate in all directions, all three axes: spin axis, vertical axis, and horizontal axis. Correct? Yes, sir. Okay, next part. What are the properties? Yes, sir. A What free are the gyroscope yes. exhibits two properties: rigidity in space and precision. Precision, Rigid precision. precision, sir. Yes, these are two different Rigid words. rigidity in space. It is the property, the FGS, by virtue of which the plane of the rotor and hence the direction of the spin axis remains rigidly fixed, pointing to a point in space. Even if the gimbals are moved, the fixed point in space to which the spin axis is pointing is referred to as the gyro star. The property of rigidity in space is the result of the angular momentum of the FGS and is given by angular momentum equals to moment of inertia multiplied by angular velocity. More the angular momentum, more will be the rigidity in space. The gyroscopic inertia, on the other hand, depends on the mass of the rotor and the distribution of the mass around the axis. इसमें एक करेक्शन कर लो everybody. Gyroscopic. Okay, हाँ. Please go ahead. Read. The gyroscopic inertia, on the other hand, depends on the mass of the rotor and the distribution of the mass around the axis, that is, radius of the rotor mass. The Okay. gyroscopic Make a correction. Not gyroscopic inertia, moment of inertia. There was some mistake when I was writing this or something. Everybody correct this gyroscopic inertia. Go write moments of inertia. Moments of inertia. Please make the correction right now. Everybody change it to moments of inertia. Yes, sir. Everybody correction made?
Correction made, everyone? I hope you have. Okay, Yes. continue. The moment of inertia is given by moment of inertia equals to mass of rotor and mean radius square divided by 2. mr square by 2. Precession. Precession is the term used to describe the movement of the axle of the gyroscope under the influence of an external force. It is the property of the FGS by due to which the spin axis, when applied with a torque, moves in a direction perpendicular to applied torque. The rate of precession is directly proportional to the applied torque and inversely proportional to gyroscopic inertia of the rotor, which is expressed by the angular momentum of the gyroscope. Rate of precession equals to applied torque divided by angular momentum. Both the Okay. properties of Good. both the properties of the gyroscope are made use of in making a gyro compass. Understood? Yes, sir. Okay, एक और क्वेश्चन में कभी पूछते हैं, what do you mean by torque? Write short note on torque. What is a torque? Torque is basically a rotational force. When a force F is applied at a distance g from the axis on an object which is free to rotate about its axis, the object will rotate about its axis. The rotational force, also called movement, is measured by the product of force and the distance at which this force is acting. Torque equals to force into distance. Another Okay. factor Hmm. that affects the measure of torque is the angle at which the force is acting. Torque is maximum when it is applied at right angle and gradually reduces as the angle is decreased. Therefore, the torque is given by torque equals to force into distance into sine theta, where theta is the angle of application of force. Okay, now what we are talking about here is, suppose there is a wood piece which is suspended about an axis. This is the axis. When we apply a force F, it is acting at a distance d away from the axis. Is that correct? Distance d. Yes, sir. Right now, it is acting at a perpendicular distance or not? Perpendicular angle. Yes. If we apply at this angle, the force reduces because it is less than 90 degree now. If we apply force at this angle, the turning force, the moment changes. How it is changing? With sine theta. Sine theta. If we take it to 0 degree and apply the torque here, it has become 0. Zero. Very good. So at 0 degree, 0 torque created. At 90 degree, maximum torque created. The same force, same distance was there, but as the angle is changing, it is also changing. The moment is also changing. The torque is changing. So torque is equal to F into D into sine theta. Theta is the angle at which the force is applied. Correct? Yes. Clear? Okay. Yes, sir. Somebody else. Somebody else. Say hi. Someone volunteer. नाम आगे अपना दो. क्या है, सब चुप बैठे हो? यस सर बताइए. ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सर. हाँ. With regard to a free gyroscope, describe tilting and drifting. Okay. So we have studied in very much detail what is tilting and drifting. Yes sir. आप लोग समझ चुके हैं, आपने देखा,
आपने पढ़ा क्लास में, आपने प्रैक्टिकल देखी कि कैसे क्या हो रहा है। अभी तुरंत हम बात कर रहे थे ईस्टर्ली वेस्टर्ली, ड्रिफ्टिंग, above and below, tilting. So we are now going to write about that. Answer, please go ahead. The spin axis of a gyroscope remains fixed in space due to its properties of rigidity, due to gyroscopic inertia. Yes. सर यहाँ पे भी gyroscopic inertia की जगह moment of inertia है कि gyroscopic inertia नहीं रहेगा? नहीं नहीं, रिमेम्बर, ओके, एक चीज देखो, अंडरस्टैंड दिस। Yes. एक चीज जो घूम रही है एक्सिस पे, वो घूमती ही रहती है। मैंने एक रोटर को घुमा दिया और स्पिन एक्सिस को पकड़ा हूं तो वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, करेक्ट? Yes sir. Yes. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कंटिन्यूअसली घूमता रहता, करेक्ट? हाँ sir. Yes. दिस इज जायरोस्कोपिक इनर्शिया, इनर्शिया के चलते वो घूमता रहता है। Yes sir. ओके, नाउ इफ Moment यू of वांट टू inertia भी तो यही स्टॉप है। इट, नाउ यू वांट टू स्टॉप इट, यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स। Yes. हाँ sir. आपको अगर रोकना है उस घूमते हुए चक्के को, तो आपको फोर्स अप्लाई करना होगा। कितना फोर्स Yes अप्लाई sir. करना होगा? नेचुरली साइकिल का चक्का घूम रहा है, उसको रोकने में जो फोर्स लगेगी, उसी आरपीएम पे जो ट्रक का चक्का घूम रहा है उसको रोकने में जो फोर्स लगेगा, दोनों में फर्क होगा कि नहीं? हाँ sir. Yes sir. Yes. तो दोनों ही जो घूम रहे थे वो जायरोस्कोपिक इनर्शिया के चलते घूम रहे हैं, बट how much of force required to oppose it or how much of tendency to continue that same thing will depend on the RPM and moment of inertia, Mass. the mass and the mass distribution. तो एक एंगुलर मोमेंटम है which is making it continuously move, but that inertia, how much of inertia is there, how much of force will I require to stop it, can be measured by angular momentum, और उसमें इनपुट आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसमें मास और रेडियस दोनों इन्वॉल्व है। तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, ये जो घूम रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ जायरोस्कोपिक इनर्शिया, बट दिस कैन बी मेजर्ड बाय एंगुलर मोमेंटम h, which is given by I omega. Yes sir. तो हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज कितनी भारी है, वेट, वेट है कि कितने तेजी से ग्रेविटी उसको पुल कर रहा है। कैसे मेजर करें? तो किलोग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम में कैसे? तो मास इनटू ग्रेविटी, mg, दैट्स द वेट। तो वेट को हमने अलग डिफाइन किया, फिर उसकी क्वांटिफिकेशन करी तो mg किया। वैसे ही यहाँ पे है, जायरोस्कोपिक इनर्शिया के चलते घूम रही है। कितना जायरोस्कोपिक इनर्शिया है? गिवन बाय h, h इज इक्वल टू व्हाट? I ओमेगा। आई बात समझ में? Yes sir. हमने आपको क्लास में बताया था कि एक रोटर है ऐसा और एक रोटर है ऐसा, दोनों का रेडियस बराबर, दोनों का मास बराबर, लेकिन दोनों की जायरोस्कोपिक इनर्शिया अलग अलग थी या नहीं? Yes sir. क्यों? हाँ, सर। क्योंकि इसका रेडियस यहाँ था इतना, इसका रेडियस ज्यादा था। तो द टेंडेंसी, how much of gyroscopic inertia is there, that is measured by this r and the mass. mr square by 2 is the gyroscopic moments of inertia, that multiplied by the angular velocity is the h. आ रहा है समझ में? ये कंफ्यूजन हो गई? बोलो।
कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। ओके ठीक है, वेट अ सेकंड। Okay, is the board visible? यस सर। Yes, sir. Okay. What we are saying here, कोई चीज घूम रही है तो घूमती ही जाती है, एक्सिस पे घूम रही है। तो सिंपल चीज हम बोलते हैं कि this is because of inertia that it is doing. Inertia is the general term by which we say that something which is rotating will continue to rotate, something which is moving will continue to move, something which is at rest will remain at rest. So these are the properties of inertia or not. At rest it will remain at rest. Motion it will continue to move like this. गाड़ी का हमने बहुत बार एग्जांपल दिया कि अगर एक्सीलेटर छोड़ दिया आपने स्पीड लेकर के और एक्सीलेटर छोड़ दिया तो भी गाड़ी चलती रहती है, इनर्शिया। अगर किसी को हमने घुमा दिया तो वो घूमती रहती है, तो ये घूम ही रही है, करेक्ट? यस तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और इसको हम बोलते हैं जायरोस्कोपिक इनर्शिया। Gyroscopic inertia makes something keep on rotating like. But how do I measure it in value? इस inertia को हम जो घूम रहा है ये, इसको हम gyroscopic inertia बोलते हैं। बट इसको मेजर कैसे करें, कितना है ये? How do I measure it? That is measured by angular momentum. The property that it will continue, अगर इसको हमने धीरे घुमाया तो रुक गया ना? कितने सर सेकंड पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो यही होता है, जो चीज घूम रही है वो घूमती रहेगी अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल नहीं फोर्सेस अप्लाइड। नहीं, ओके। अब इसमें एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल इज दिस। When it is turning, the radius of this particle, this radius, this particle is moving in this circle or not? यस सर। यहाँ पे जो पार्टिकल है, it is moving in this or not? यस सर। जो यहाँ पे पार्टिकल है, that is moving like this or not? यस। That means each particle on this rotor is moving at a different radius. यस। अगर आपके पास दो रोटर हो, एक ये और एक ये, दोनों को एक ही आरपीएम पे घुमा दिया, इसको रोकने में और इसको रोकने में कौन जल्दी रुकेगा? किसको कम फोर्स लगेगा? जिसका रेडियस कम होगा। जो छोटा वाला होगा इसमें कम मोमेंट है, कम मोमेंटम है, यस। और जो बड़े वाला होगा उसमें ज्यादा मोमेंटम है, यस। मास। तो अगर हम इस पूरे बॉडी को देखें तो हर पॉइंट को अलग अलग मोमेंटम होगी। यस। तो इसको हम एवरेज आउट करते हैं mr²/2 से। ओवरऑल जो इसका मोमेंट होएगा दैट इज mr²/2। इसका मीन रेडियस ये निकलता है। तो ये we are understanding that this is the circle or this is the radius of the rotor. Yes. So the simple
प्लेन लैंग्वेज प्रॉपर्टी जिसमें साइंस नहीं है, सिर्फ हम इनर्शिया बोल रहे हैं कि इनर्शिया के चलते घूमता है। इनर्शिया क्या कहता है कि जो कर रहा है वो करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अपोज ना करे। तो मैं अपोज करने जाता हूं, कितना अपोज करना पड़ेगा ताकि रोक सकूं? दैट विल डिपेंड ऑन इट्स मास एंड इट्स मेन रेडियस एंड आल्सो द एंगुलर वेलोसिटी। करेक्ट और नॉट? जितना तेज घूमता होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इस सिस्टम का, इस पूरे रोटर के सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस। These are basically derived from the integration of each of the particles. इतना डिटेल में मत जाओ. Don't go into so much of detail. Remember one thing, that gyroscopic inertia के चलते it is continuing to move. The tendency to move is measured by angular momentum, which is, of course, it is given by I omega. You know what is I. Yes, sir. ठीक है, sir. समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Okay, sir. मैं खाना खा के जिंदा रहता हूँ। जिंदा रहने के लिए खाना खाना होता है। सर जिंदा रहने के लिए खाना खाना होता ओके, तो दैट्स जायरोस्कोपिक इनर्शिया। घूमने के लिए जायरोस्कोपिक इनर्शिया, घूमने से जायरोस्कोपिक इनर्शिया होती है। कितना खाना खाना है मुझको अगर जिंदा रहना है? कम से कम इतना खाना तो खाना है। हाँ सर। 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम रोटी, इतना खाना चाहिए मुझको। मैं जो खाना खाने की प्रॉपर्टी है मेरी, उसको मैं मेजर कर रहा हूं कि कितना। यस सर। तो जायरोस्कोपिक इनर्शिया इस वो खाना खाने का टेंडेंसी और नेचर की जरूरत। बट 2 रोटी 2 चावल इज एंगुलर मोमेंटम। क्वांटिफाइंग इट, कितना? अंडरस्टूड? यस सर। सर टाइम हो गया सर। टाइम हो गया? अच्छा, ओके, ठीक है। सो आज हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, वी शुड हैव गॉन फॉरवर्ड, बट इधर उधर के काफी डिस्कशन में रह गए हम लोग, थोड़ा लेट भी शुरू हुआ। सो नेक्स्ट क्लास विल टेक इट अप। यहाँ पे जायरोस्कोप पढ़ना अब खत्म हो गया, हमने जायरोस्कोप समझ लिया। नाउ वी विल ट्राई टू मेक अ कंपास आउट ऑफ दिस। द फर्स्ट स्टेप विल बी टेकन इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी आर मेकिंग दिस रोटर which is rotating about the spin axis in the gimbals, something called free gyroscope. We will try to make it a compass. We will take first step in the next class. ओके सर, थैंक यू सर। Bye. Take care. Signing off. सर Chalo, bye. Thank Bye. you, sir. Bye. Signing off. Thank you, sir. Okay.